In a large housing complex, there are 15 small buildings and 22 large buildings. Each of the large buildings has 10 floors with 2 apartments on each floor. Each of the small buildings has 12 floors with three apartments on each floor. How many apartments are there in all? First of all, number of small buildings is equal to 15. Number of large buildings is equal to 22. Number of floors in one large building is equal to 10. Number of floors in 22 large building is equal to 22 multiply 10. Number of apartments on each floor of large building is equal to 2. Number of apartments on 220 floors, because the number of floors in 22 large building is 220. 22 multiply 10, 220. So number of apartments on 220 floors is equal to 220 multiply 2. Now number of small buildings is equal to 15. Number of floors on one small building is equal to 12. Number of floors on 15 small buildings is equal to 15 multiply 12. Have you understood? 15 multiply 12 is equal to 180. Number of floors on 15 small buildings is equal to 15 multiply 12 is equal to 180. Now, number of apartments on each floor of a small building is equal to 3. Number of apartments on 180 floors of a small building is equal to 180 multiply 3. Student, I have found the number of floors in 15 small buildings is equal to 15 multiply 12. And when you multiply 15 by 12, you will get 180. I am telling you, I am solving this problem verbally, because this is a very easy problem. You can solve it quickly. A student,
number of apartments on one floor of a small buildings is equal to 3. Number of floors on 180, number of apartments on 180 floors in a small buildings is equal to 180 into 3 is equal to 540. Okay, students. Now you have to find how many apartments are there in all. How many apartments are there in all? Student, to find the number of apartments in all, you have to add both the apartments what you have got in large buildings and small buildings. Okay, student, have you understood? Student, how many apartments are there in all? टोटल अपार्टमेंट्स कितना है स्टूडेंट? तो आपने 15 स्मॉल बिल्डिंग्स में जितना अपार्टमेंट निकाला और 22 लार्ज बिल्डिंग में जितना अपार्टमेंट निकाला, मैंने कहा कि 15 स्मॉल बिल्डिंग्स में जितना अपार्टमेंट्स आपने निकाला और 22 लार्ज बिल्डिंग में जितना अपार्टमेंट आपने निकाला, उस दोनों अपार्टमेंट्स के नंबर को आप ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आपको निकल जाएगा, जो कि एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, एक लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट की संख्या को बताएगा। स्टूडेंट, मैंने इस क्वेश्चन को लिखकर नहीं बताया। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मेरे सर इस क्वेश्चन को लिखकर बता दे, तो इस सिचुएशन में भी मैं बता सकता हूं। जरा ध्यान देना कि मैं तुम्हें यह लिख करके बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट, पूरी तरह से अलर्ट रहना। नंबर ऑफ फ्लोर्स, number of floors in one small building। स्टूडेंट, कॉपी को जरा ध्यान से देखना। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन वन स्मॉल बिल्डिंग इज इक्वल टू, स्टूडेंट, 12। यहाँ देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 12 है ना। क्वेश्चन में 12 है, दिखाई दे रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 केवल नंबर ऑफ फ्लोर्स इन वन स्मॉल बिल्डिंग। नाउ नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 15 स्मॉल बिल्डिंग्स, इन 15 स्मॉल बिल्डिंग्स इज इक्वल टू 12 इंटू 15। मैंने कहा है, द्वारा इसको अच्छे ढंग से देखना। मैं 12 में 15 से भी मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे जिनको मल्टीप्लाई नहीं होता है, 5 2 जा 10, वो मल्टीप्लाई भी सीख लेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 6 2 8 1, 180। इसके पहले भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 15 स्मॉल बिल्डिंग्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 15, दैट इज 180 होगा। स्टूडेंट, अब हम अपार्टमेंट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ऑन, यहां ध्यान देना,
ईच फ्लोर मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ऑन 180 फ्लोर्स, 180 फ्लोर्स इज इक्वल टू 180 इंटू 3। 18 3 जा सीधे कर दो, 18 3 जा 54 और उस पर एक जीरो पुटअप कर दो। स्टूडेंट, स्मॉल बिल्डिंग का निकल गया। अब हम लार्ज बिल्डिंग की बात करते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन वन लार्ज बिल्डिंग, in one large building, number of floors in one large building is equal to। अब स्टूडेंट जरा यहां देखो, यहां ध्यान से, यहां लार्ज बिल्डिंग है 22 लार्ज बिल्डिंग, इसके एक ईच ऑफ लार्ज बिल्डिंग, इसके एक लार्ज बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर मेरी कॉपी पर देखो, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन वन लार्ज बिल्डिंग इज इक्वल टू 10। फिर लिखोगे, मैं इसको बीच में कॉपी को कर देता हूं ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन नंबर ऑफ फ्लोर्स इन कितने लार्ज बिल्डिंग? स्टूडेंट याद रहना चाहिए तुमको, 22 लार्ज बिल्डिंग, उसमें 22 ही ना था, इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 10। 22 में 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 220।